13 महीने बाद जो है मुझ पर एक आत्मघाती हमला किया गया। और मेरे बच्चों को जो है ज़बरदस्ती मेरे घर से ले जाया गया और उनको जो है बेघर कर दिया गया। उस हमले में मैं बच तो गया, लेकिन जो है उसके बाद जो है मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई, उलट-पुलट हो गई पूरी। Hi and welcome to हारा नहीं, a podcast dedicated to parental alienation. इस पॉडकास्ट पर हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों तक असली कहानियाँ पहुँचाएं, सच्ची कहानियाँ पहुँचाएं और इस तरह के एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं जो पेरेंटल एलियनेशन पर फोकस्ड हैं। आज हमारे साथ हैं अशरफ अंसारी। अशरफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके शो पर बुलाया, हरा नहीं शो पर। एंड यस, सो मैं अशरफ अंसारी मुंबई से, और मैं एक काफ़ी हम्बल फैमिली को बिलोंग करता हूँ, और मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। मुझे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और ट्रैकिंग जैसे स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि है। और मैं जो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानता हूँ, जो सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव करने की इच्छा रखता है। थैंक्स अशरफ फॉर दैट। आई डू वांट टू स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। हम ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया आप एक हम्बल फैमिली से हैं, आपका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, थोड़ा सा और बताइए हमें आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, एंड लेट्स टेक द स्टोरी फ्रॉम देयर। ओके, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी 11 साल की लड़की है और 7 साल का लड़का है मेरा। ओके, एंड मेरी वाइफ जो है 3 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। एंड जो मेरे डैड है, मैं मेरे डैड के साथ रहता हूँ अभी। एंड माय यंगर ब्रदर इज अब्रॉड, या सो ही इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन अब्रॉड, या so yeah, that's about my family background. However, I have also have extended family members. मेरे चाचा चाची और मेरे मामा मामी और ये सब भी हैं काफ़ी। तो एक जॉइंट फैमिली में जो है मेरा रहना है। Great. So, Ashraf, I want to know a little bit more about your married life. How long have you been married? And a little bit more about what is the current situation. क्या आप अपने बच्चों से मिल पाते हैं? अभी की situation क्या है आपकी family? ओके, मेरी जो शादी हुई 2010 में हुई, और उसके बाद 2011 में मेरी बेटी बॉर्न हुई थी। एंड 2013 में जो है मुझे काफ़ी बड़ा झटका मिला, कि जहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। एंड वो पकड़ी गई। तो उसके बाद में जो है उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे एक फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट बना कर दिया, जहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि ये चीज़ वापस से नहीं दोहराई जाएगी। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज मैं अपनी बेटी को एक ब्रोकन फैमिली का एक्सपीरियंस नहीं देना चाहता था, तो मैंने जो है अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को यहाँ से माइग्रेट करके दुबई लेकर चला गया, और हम वहीं पर रहे। और 2015 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, और फिर 2017 में जो है मैं वापस इंडिया आया। एंड फिर मैंने इंडिया में ही काम शुरू किया, और फिर जो है मेरी वाइफ ने जो है वापस से वो लाइफस्टाइल शुरू कर दी थी। और 2020 में जो है वो पकड़ी गई, और फिर उसने जो है 2020 में 2nd of May she left the house. Okay, so it's almost been 3 years that she is not living with me. However, मैं एक सिंगल पेरेंट था 2020 में। एंड मैं आई इंश्योर्ड टू माई चिल्ड्रन दैट आई टेक देम टू मीट द मदर, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को ये चीज़ का एहसास हो कि उनकी माँ जो है उनके साथ नहीं रहती। ओके, और मैं अपने बच्चों की हर चीज़ का ख्याल रखता, बी इट एजुकेशन, बी इट स्पोर्ट्स, और बी इट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़। सो लेकिन हुआ ये कि 13 महीने बाद जो है मुझ पर एक आत्मघाती हमला किया गया, और मेरे बच्चों को जो है ज़बरदस्ती मेरे घर से ले जाया गया और उनको जो है बेघर कर दिया गया। उस हमले में मैं बच तो गया, लेकिन जो है उसके बाद जो है मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई, उलट-पुलट हो गई पूरी। क्योंकि उस वक्त में जो है मैं कोविड से लड़ रहा था, और मेरी मम्मी पापा जो हैं वो भी कोविड से लड़ रहे थे। मैं घर पर सेल्फ क्वारंटीन में था मैं, और मेरे मम्मी पापा जो हैं हॉस्पिटलाइज थे, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। और इस बीच में जो है
कोविड के नॉर्म्स को फॉलो भी नहीं किया गया और मेरे बच्चों को जो है मुझसे जो है ज़बरदस्ती दूर कर दिया गया। और उसके बाद से जो है मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। और इन पिछले 3 सालों में मैंने अपनी वाइफ को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, और मैंने अपनी माँ को भी खोया है। क्योंकि जब ये हादसा हुआ था उसके 2 हफ्ते बाद में मेरी मॉम का देहांत हो गया, और उसके 1 साल बाद में मेरे बड़े पापा का भी देहांत हो गया। सो इट हैज़ बिन अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर मी, एंड एंड राइट नाउ 183 दिन हो चुके हैं जब मैं बच्चों से अपने मिला नहीं हूँ, ना तो मैं उनको देख पा रहा हूँ, और ना ही मैं जो है उनसे मिल पा रहा हूँ, ना बात कर पा रहा हूँ। आपके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहा अशरफ, एंड ये एक कॉन्ट्रास्ट है जो विच इज़ हार्ड टू इग्नोर, कि जब बच्चे आपके पास थे तब आपने प्रोएक्टिवली कोशिश की कि वो अपनी माँ से मिलते रहें, आप उन्हें दोनों पेरेंट्स का प्यार दे पाएँ, टाइम दे पाएँ। बट जब से बच्चे आपसे लिए गए हैं तब से आप उनसे मिल नहीं पाए। इट्स बीन मोर देन 3 months नाउ, 6 months यस, now in 6 fact. मंथ्स। 6 months now. Fair. And currently, what mind space are you in right now? आप इससे किस तरह से डील कर रहे हैं? बिकॉज आई कैन ओनली इमेजिन ऑलरेडी जिस तरीके से आपने कहा, लूजिंग फैमिली मेम्बर्स, लूजिंग योर चिल्ड्रन, लूजिंग योर मैरिज, और अब इस पॉइंट पर आकर के आपके मन में क्या इमोशंस आते हैं और आप उनसे कैसे डील करते हैं? लाइक व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर यू पर्सनली, एंड देन क्या आप इसे लीगली भी परस्यू कर रहे हैं? व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स दैट यू आर टेकिंग अप? ओके, वेल सी, ये तो मतलब बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है मेरे लिए। ऑफ कोर्स जब मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए थे तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहता था, और ट्रॉमा भी था मुझे बहुत ज़्यादा। ये एपिसोड जो है बार बार मेरे दिमाग में लूप में चलते थे कि वाई डिड दिस हैपेंड विद मी। ओके, लेकिन होता ये था ना कि बच्चों के लिए जो है, मेरे बच्चे जो थे मेरी ज़िंदगी थे। आफ्टर माई लाइफ, like because I loved my wife very much. I will say it on the camera also, and I cherished it a lot. But that marriage did not succeed. So the only thing that was left out of the marriage were my children. Okay, and they were, yeah, and they were like everything for me. And when they were taken away, I was like totally broken up. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जो है तो एंड आज के वक्त जो है अभी भी मेरे बच्चे जो है मेरी हमेशा मेरी नज़र के सामने होते हैं। इनफैक्ट दे आर लाइक अ लेंस, बिटवीन यू एंड मी राइट नाउ। आई एम सीइंग यू बट आई कैन सी देम कॉन्स्टेंटली। ओके, तो मैं हमेशा उनको देखते रहता हूँ। और जब मैं बहुत ज़्यादा पेन में होता है, एंग्जाइटी फील करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने रनिंग शूज़ उठाता हूँ और मैं रनिंग शुरू कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरे जो बच्चे हैं मुझसे 8 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तो मैं जो है वो 8 किलोमीटर में दौड़ता हूँ। और मैं वहाँ पे पहुँच के मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे एक झलक मेरे बच्चों की मिल जाए, ताकि मैं उनको देख लूँ और मेरे दिल को जो है सुकून मिल जाए, और फिर जो है मैं वापस आ जाता हूँ वहाँ से। सो ये इस तरीके से जो है मैं अपने इमोशंस को जो है मैं प्रोसेस कर लेता हूँ। एंड दिस स्टार्टेड 2 years अगो। एंड जहाँ पे जो है मैंने अपने आप को हीलिंग करना शुरू किया मैंने। और मुझे ये समझ आया कि मुझे जो है अपने आप को फिजिकली और स्पिरिचुअली जो है स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं, और मैं अपने बच्चों को न्याय दिला सकूं और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दिला सकूं। सो इसके लिए जो है मैंने एक प्रेयर रन शुरू की, और जो है मैंने फिर जो है रेगुलरली मैंने दौड़ना शुरू किया, और मैंने फिर साइकिलिंग भी शुरू की, ताकि मैं लोगों को बता सकूं। क्योंकि आज जो है मुझे ये पता है कि ये चीज़ जो है सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही है। इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो पेरेंटल एलियनेशन का शिकार हैं, जो जानबूझ के अपने माँ से या बाप से उनको दूर किया जा रहा है, और उनको जो है एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सटॉर्शन के लिए, या इमोशनली या मेंटली हर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसमें सिर्फ माँ या बाप ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स या दादा दादी या नाना नानी या चाचा चाची और बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं इसके वजह से। और जब एक पेरेंट्स को या एक दादा दादी को अपने ही बच्चे से या पोते से मिलने का लिए जो है इतनी कश्मकश करनी पड़ती है,
और उनको ऐसे हेल्पलेसनेस फील होती है, तो वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे वो सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पेरेंटल एलियनेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पीपल कमिटिंग सुसाइड। या तो जब जी। मुझे ये समझ आया तो मुझे लगा कि मुझे जो है अपने आप को जो है मोटिवेट करना होगा और अपने आप को उस अपने आप को वो हीरो बनाना पड़ेगा जो मेरे बच्चे मुझे देखते हैं। ओके। और मुझे उनके लिए लड़ना होगा, और मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए लड़ना होगा जो पेरेंटल एलियनेशन का शिकार है। तो फिर जो है मैंने ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस मैंने रन करना शुरू किया। तो मेरा जो पहला ऑफिशियल प्रेयर रन था वो मैंने पवई से माउंट मैरी चर्च किया था। ओके। एंड हाउ मच that was a था? 22-kilometer run that I did. Okay. जी। And this I did on 26th of May 2021, जहाँ पे मैंने मदर मैरी से प्रे किया कि मदर मैरी ब्लेस माई चिल्ड्रन, द प्रेजेंस ऑफ देयर फादर इन देयर लाइफ, एंड ब्लेस ऑल द चिल्ड्रन that they come out of this parental alienation, they reunify with their parents. And you will not believe, within 2 weeks I was able to meet my children, okay, for the first time वाओ! after 13 months. Okay. And so that made me more firm in my belief that कि ये prayer run मैं करता रहूँगा। और फिर मैंने जो है on the occasion of Father's Day मैंने 236 किलोमीटर रन किया from Powai to Shirdi जी। over a period of 2.5 days to show to the world वाओ! that कि भाई फादर्स डे जो है वो फादर और बच्चों के लिए है। सो अ मदर should not stop the children to celebrate this Father's Day with them. And because I was questioned by the mother of my children that who are you to celebrate Father's Day with my children, so it took me 236 kilometers to process that and to show that what kind of a spirit a father has, and to what extent a father can go to show to the world that a father will never give up on their children, and the father will do anything and everything for the children. एंड इसी तरीके से जो है मैंने प्रेयर रन कंटिन्यू रखी, और मैं जो है मैंने फिर उसको साइकिलिंग पे भी लेकर गया मैं, सो दैट आई कवर मोर डिस्टेंस, बिकॉज आई वांट टू गो टू अक्रॉस इंडिया एंड स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि भाई पेरेंटल एलियनेशन कितना खतरनाक है हमारे बच्चों के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए, जी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे वो लोग जो है अपनी लाइफ गिव अप कर रहे हैं। ओके। तो मैंने फिर जो है अक्टूबर में मैंने मुंबई से हैदराबाद 750 किलोमीटर्स का साइकिलिंग भी किया मैंने, एंड वहाँ पे मैंने फिर हैदराबाद मैराथन में मैंने जो है पार्टिसिपेट किया। बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है, और अगर उनको एक अच्छी जी। परवरिश मिलेगी तो बच्चे जो है हमारे देश को और आगे बढ़ाएंगे। ओके। सो जी। दैट इज द सिचुएशन दैट इज देयर राइट नाउ। यस। अशरफ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड माइंड से एक नेगेटिव सिचुएशन को एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पिन किया। ये बहुत मुश्किल होता है, ईजियर सेड देन डन। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट मेड दिस पॉसिबल फॉर यू? क्या हमेशा से आप यू बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस वाज समथिंग दैट नेचुरली केम टू यू कि ये आप कर पाए, या फिर वर देयर सर्टेन पीपल हु प्लेड अ पार्ट, मे बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, सोसाइटी, मे बी योर किड्स, लाइक कैन यू वॉक अस थ्रू दैट प्रोसेस? आज अगर कोई पेरेंट ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वो अगला कदम कैसे लें? वेल, the biggest strength for me was my father. Uh, actually, okay. Yes. Okay. See, as I mentioned that मैं बहुत ही humble family को belong करता हूँ, and मेरे जो family में जो मेरे जो grandfather रहे हैं वो एक बहुत ही मतलब एक he played a very positive role in our life. उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से लीड किया है उनकी लाइफ, एंड उन्होंने जो है हमें इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया, हमारे फादर्स एंड अंकल्स को भी एंड हमें भी, कि दैट हमें जो है समाज में क्या सही है और क्या गलत है उसकी काफ़ी अच्छी पहचान उस वजह से। एंड माई ग्रैंड फादर ऑलवेज बिलीव दैट कि भाई नो मैटर व्हाट द चैलेंज इज, अगर आपको जो भगवान ने इस दुनिया में भेजा है तो ये चैलेंजेस भी भगवान ने ही बनाए, एंड यू कैन ओवरकम दैट दोज चैलेंजेस। ओके। एंड माई फादर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग मी ऑलवेज, नो मैटर वॉट। ओके। एंड आफ्टर माई मदर पास्ड अवे, ही वॉज
he was my father and he was my mother as well. Okay, so and he has supported me throughout always. Okay, and जी you know I maybe हो सकता है I would have become a victim as well, but I feel that I'm on the journey to become a warrior. Okay, and that is only because of the upbringing that I have. Okay, because I come जी from a family which has put the child's needs first. Okay, be it my grandfather, my grandmother, or my uncle and auntie, or my father and mother, they always believed in giving a positive environment to the children. कि भाई बच्चों को जो है ऐसा माहौल दो कि जहाँ पे जो है वो अपने आप से सीखें चीज़ों को, और अपने जो है अपनी फाइट खुद लड़े और वो एक विनर बनकर जो है निकले. So, जी so that is my biggest strength. And the other thing is, what my children are going through right now, I totally understand. And it is my responsibility as a father to ensure that, I safeguard the interest and welfare of my children. अगर मैं गिव अप कर जाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए लड़ेगा कौन? तो ये थॉट जो है, ये मुझे जो है, ये हमेशा जो है मुझे इट कीप्स मी अप एंड इट कीप्स मी गोइंग. ओके, एंड ऑल्सो एज अ मैटर जी ऑफ फैक्ट, my wife comes from a broken family, and my wife has also experienced parental alienation, wherein she her father या walked away from the house when she was 10-year-old. Okay, so I understand that if her father gave up on them, okay, so she became someone who's replicating what happened with her. So मैं नहीं चाहता कि राइट मेरे बच्चे जो हैं, मेरी जो डॉटर है, किसी एक किसी मतलब एक आदमी की जो है लाइफ बर्बाद करे, और ना तो मैं चाहता हूँ कि जी मेरा जो बेटा है वो किसी औरत की लाइफ बर्बाद करे. सो दैट्स व्हाई आई एम इन दिस फाइट, एंड आई वांट टू टेक पैरेंटल एलियनेशन हेड ऑन. या अशरफ, आपने इतनी सारी बातें कही, मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से इसे पिकअप किया जाए, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने कही, वन ऑफ देम बीइंग दैट योर वाइफ कम्स फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली एंड वी वर रिसेंटली टॉकिंग टू डॉक्टर कपूर, जिसमें उन्होंने भी ये चीज़ कही कि जो बच्चे पेरेंटल एलियनेशन एक्सपीरियंस करते हैं उनके लिए ये चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वो अपनी लाइफ में वो ट्रॉमास रिपीट करते हैं एंड दे एंड अप देन बीइंग द पर्सन हु एलियनेट्स देयर चिल्ड्रन एज वेल. And I think this is something that we're seeing here. या But tell me, other than your family, how was your situation received by friends? क्या आपने अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से, या जनरली अपनी सोसाइटी से, डिड यू अपील फॉर सपोर्ट एंड क्या आपको वो सपोर्ट मिल पाया? यस. सो जैसे मैंने मेंशन किया कि ये 2013 में मेरे साथ हो चुका था, और जब भी मैंने जो है जी लोगों को बताया नहीं था इस बारे में. ओके, एंड when this happened with me in 2020, so I realized जी that okay, if I keep my mouth shut now, I will not be in a good position, and it will eat me up from inside. Okay, so इस वजह से जो है मैंने I was very vocal about it, and I started talking जी to everybody. Initially they did not believe me कि भाई ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ. But then when I told them about my story, and I showed them the pictures and the audio recordings, so then they believed me. Okay, the other part is, लोगों को जो है, मैंने जो प्रेयर रन शुरू की थी उसमें लोगों को बिलीव नहीं था कि भाई ये क्या कर रहा है यार, तू अपने पैर तोड़ रहा है यार, 236 किलोमीटर तू भाग रहा है. ओके, क्या अचीव कर लेगा तू इससे? ठीक है. एंड बट व्हाट हैपेंड इज, over a period of time, when they saw the kind of response people are giving in terms of कि मेरे YouTube चैनल पे या जो भी है कमेंट्स करते थे लोग, तो जहाँ कमेंट्स में ऐसा होता था कि अशरफ, आई एम ऑल्सो अ फादर एंड आई सी माई सेल्फ इन यू राइट नाउ. ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप आफ्टर वॉचिंग यू. आई विल फाइट फॉर माई चिल्ड्रन. ओके, and you will not believe, if you go through my timeline, there are people who said कि I almost gave up on my children. मैं तो अब बस सोच रहा था कि I will do something with my life, but now I won't. Okay, so Ashraf, keep वाह doing what you're doing. We ग्रेट are getting a lot of inspiration from you, and yes, so this is how it is. Yeah, from the society I'm getting a lot of support, and it is not only the people who are suffering from parental alienation.
इट इज़ ऑल्सो द यंग पीपल. बहुत सारे यंग लोग हैं जो जिनके साथ में मैं रनिंग या साइकिलिंग करता हूँ, वो भी इस कॉज में बिलीव करते हैं एंड दे फील दैट कि भाई अगर हम शादी करें तो वी नीड टू एंश्योर दैट बिफोर वी स्टार्ट फैमिली प्लानिंग, मुझे और मेरी वाइफ को ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हम लोग इफ वी थिंक ऑफ डिसाइडिंग कि भाई वी वांट टू गेट सेपरेटेड, so first we need to think about the children first and then we may make a decision like that. Yeah. So yeah, there is a जी lot of acceptance. However, we have not reached to a level जहाँ पे हर किसी को इस बारे में पता चले. जी अशरफ, आई एम जस्ट क्यूरियस, आपने बताया आपकी बेटी अभी 11 साल की है, सो शी इज़ इन दैट स्पेस जहाँ पे उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि घर पे क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू मीट माई फादर एट्सेट्रा. क्या आपने कोई ऐसे विजिबल चेंजेस देखे अपने बच्चों के बिहेवियर में टुवर्ड्स यू? क्या आपको लगता है दे आर स्टिल क्लोज टू यू, स्पेशली योर डॉटर, शी इज़ ओल्डर? क्या आपको लगता है आपके बीच में अभी भी वो एक कनेक्शन है, रिलेशनशिप इज स्टिल देयर, एंड अगर आप मिल पाएंगे फ्रीक्वेंटली यू विल बी एबल टू नर्चर इट, या फिर आपको लगता है यू स्टार्टिंग टू सी चेंजेस इन देयर बिहेवियर एज वेल? Well, देखिए, मेरे बच्चों को जो है ना एक कोएर्सिव कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है. ठीक है. लेकिन द मोमेंट दे मीट मी, ओके, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 15 minutes and they are like just like it's like a flip of a switch and they are they are what they were 2 years ago. It's like that. So जी I met them in September on my daughter's birthday. I like my whole family celebrated my daughter's birthday, and then after that I kept meeting them for almost 4 to 5 weeks, wherein Fridays को मैं उनको लेकर आता था, and Friday night and Saturday night they used to stay with me at my house, okay, and then Sunday को मैं उनको drop कर देता था. ठीक है. So initially the first meeting I had after 13 months, वहाँ पे जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस था कि वहाँ पे उनको ये लगता था कि अगर especially my daughter, you will not believe if I have to narrate that incident. जैसे मैंने बताया कि after my prayer run to Mount Mary Church, okay, I met them after 13 months. So I met them in the mall, and when I went to them, my son just jumped on me. He just ran and he jumped on me, Abbu करके, okay. And my daughter was a little, तो उसको थोड़ा सा ऐसे था कि मतलब थोड़ा सा कि like and she was my wife was also around, and she was just like looking at the mother and thinking if I display my love towards my father, will I be like questioned, or will I be treated in a wrong manner. Okay, so that was there, that is my experience, and that I've seen, and that was the reason why my children were stopped after September 18th, September 19th I started meeting them, and 14th October was the last day I met them. And the mother thought that that they are getting very close to the father again, and that's why she stopped. Okay, that was one of the reason for that. And what I believe, that I share a very strong bond with my children. Okay, and I don't think it's going to dissolve over a period of 6 months or a year or two. Okay, so yes, so that is the kind of bonding that I have with my children. But of course, because of parental alienation, they are being resisted to show that, and there is no communication as such between us right now. श्योर. सो अशरफ, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपकी वाइफ किस तरीके से कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पा रही हैं, एंड इफ देयर इज एनी एवेन्यू फॉर यू टू बी एबल टू मीट योर चिल्ड्रन, मे बी एट होम, योर स्पाउसेस होम, और मे बी इन अ पब्लिक प्लेस, या फिर स्कूल में, या आपने कोई ऐसी कोशिश की हो जो आपकी वाइफ की तरफ से शी माइट हैव स्टॉप्ड यू इन contacting your children? Okay, yeah, got it. So as I mentioned, September and October, my children were coming to my house and very Yeah. much in touch with me. Yeah. So I gave them their tabs which they had, the Samsung tabs, and उसमें मैंने जो है WhatsApp नंबर भी लेकर जो है मेरी बेटी को दिया था. And my daughter and my son used to connect with me on a daily basis on video calls. Okay, and 14th of October, I was completely disconnected from the WhatsApp, and there was no phone calls after that. And मैं जो है daily
I'm telling you, daily I'm sending emails to my to the mother of my children, asking that I want to meet my children, and you keep them ready. I will come and I'll pick them up, and I will make them meet their family members, and I'll drop them back. But she's declining on that. तो यहाँ पर जो है ना कि मैं जो है काफी कोशिश कर रहा हूँ. इनफैक्ट मैं काफी लेटर्स भी भेजता था मेरे द मदर ऑफ माय चिल्ड्रंस हाउस where she used to stay, sending her reminders that I want to meet my children for so and so reasons. Okay, but what happened is, in December the letter started returning, and letter में ये लिखकर आया कि such person doesn't stay at this address. Okay, so then I realized कि भाई ये एड्रेस पे ये रह नहीं रही. So then I started sending emails. Okay, ईमेल मैंने शुरू किया भेजने के लिए, एंड ईमेल में मैंने फिर इनफैक्ट जैसे मैंने मेंशन किया कि it has been 183 days. The only reason why I remember this is because I'm sending emails to her. That it is 180 days, 181 days, 182 days. I haven't seen my children. I want to meet them. Okay, and especially they should be meeting me, because it is important for them to understand कि भाई their parents are not fighting because of them. They need to understand that, and they need to believe that. Okay, so and apart from that, फेब्रुवरी में जो है मेरे पापा को जो है हार्ट अटैक आया था, एंड आई वाज टेकिंग माय फादर टू द हॉस्पिटल, एंड आई कॉल्ड माय वाइफ आस्किंग कि भाई तुम जो है बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ, बिकॉज पापा का जो है हार्ट अटैक आया है, एंड ही इज आस्किंग टू मीट द चिल्ड्रन. बट देन शी सेड नो. शी सेड आई विल ब्रिंग द चिल्ड्रन. ओके, एंड then 10 p.m. in the night, when there is no visiting hours also, she's calling me saying that that I have come to the hospital with the children, but the guard is not allowing me, so I'm going back. Okay, so that is the kind of tactics that she's using to keep the children away. And daily I'm sending her messages saying that I want to meet my children. And in fact it has come to a point, Pallavi, के जहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे जिंदा है या मर गए. I will use this word because it has been 183 days I haven't seen them. Okay, and मैं ना तो उनसे बात कर पा रहा हूँ, ना मैं उनको मिल पा रहा हूँ, और मैं बार बार जो है I feel like a beggar in front of the mother of my own children. I am a biological father and I am begging to meet my own children. Okay, तो ये जो है अभी सिचुएशन है. Yes. Ashraf, at this point, do you know where your kids are? आप जानते हैं आपकी फैमिली कहाँ है? Since the change of it. No, I don't know. No. That can be very distressing. आपने ऐसे में आपका resolution क्या रहा? आपने have you appealed to the courts, or are you trying to contact them through relatives, या आपने friends से या किसी से पूछकर contact establish करने की कोशिश की, या आपके क्या steps रहे? Okay. Well, see, there is already a criminal case in the court that's there. Okay, I am pursuing that. Apart from that, I have also filed a complaint with the Maharashtra State Council for Protection of Child Rights. Okay, so वो भी जो है मैं pursue कर रहा हूँ. Okay, wherein I have clearly mentioned that my children are kept in a very negative environment, and their basic needs are being neglected. Okay, because my children were studying in a school, but then I found out that my children are not even studying. Okay. For almost a year, they were not studying in school. Then later, when the MSc PCR complaint was filed, I got to know that my children are studying in a school. Okay. So, yes. So, but I'm not approaching this school because I have understood that school jo hai, they don't entertain the parents. Okay. Apart from that, comes to friends and family members. The family members are clearly instructed not to, entertain me at all. Okay. Because they are also not able to answer me, because they were the ones who signed on the family settlement agreement. तो वो आज ये बोलते हैं कि हम क्या करें जो है, we are trying to make her understand she is not listening to us. Okay, and जो friends है, the friends are being just abused when they trying to speak to her and make her understand that why are you making the children suffer because of this. So they are being abused. So that's why there is no way of communicating. So however I am communicating with her in whatever way I can, and asking her to follow the arrangement that we made on 18th of September 2022. Yeah. Ashraf,
Is there a message that you would like to give your children or your spouse who might be watching this podcast? Okay. Well, to my spouse, the message is that stop thinking that the children are your property, and stop taking decisions as per your whims and fancies on them. Okay, because जितने ही वो आपके बच्चे हैं उतने ही मेरे हैं, and the children have the right to access both the parents irrespective of they living together or not. Okay, this is as per the United Nations Convention of the Rights of the Children. Okay, yeah, and India is a signatory to that. Okay, apart from that, I also want to tell her that we should practice shared parenting. Equal authority, equal responsibility should be practiced. Okay, so that the children starts believing that our existence, my father and mother, they love me, they love us very much, and they are happy with our existence. Okay, because when it is the mother and father fighting, it is the children who suffers Right. the most in that. Yeah. Ji. Yes, so that is the message for my wife, and the message for my children is that Abu loves you very much, and Abu will never give up on you, and will fight. He'll keep fighting until we get reunited again, and yes, yeah. So that that's the message for my children. Yeah. Sure. So. एंड अशरफ, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई मेमोरी आपके मन में हो अपने बच्चों के साथ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? Okay. Well, there are many memories that I have. So मैं ये करता था कि जो कहानियों को जो है मैं उसके एकेडमिक्स के जो रिलेटेड होता था उससे मिलाकर जो है मैं उसको कहानियाँ सुनाता था. So for example, like if I have to tell him a story, I would say that A for apple, B for ball, and all of that. So I used to create characters. Okay, and what we are doing is we are actually going into a zoo. Okay, and then we are coming across characters, and then we are called actually what do you call engaging with the characters. Okay, so वो काफी जो है बहुत ही वो ये हो जाता था, मतलब it was very funny kind of a engagement, and my son used to love it a lot, and my daughter also. Yeah. Apart from that, the memories that I have is I was very much into self defense. Okay, तो मैं जो है मेरे बच्चों को जो है मैं उनको भी जो है सेल्फ डिफेंस सिखाता था. इनफैक्ट आई वाज आल्सो अफिलिएटेड विद अ क्लब आल्सो, a mixed martial arts club. So I used to take them there also. Okay, so यहाँ पे so I was one of the people who were doing the best in the club. So I had so many records. Okay, in the club जहाँ पे बोर्ड था, and I had so many records कि भाई जहाँ पे कि अशरफ का रिकॉर्ड भी कोई तोड़ दो करके ऐसा काइंड ऑफ and when my children they also got in, तो उनके जो एज ग्रुप में थे ना, so my son was replicating the same thing. Okay, जहाँ पे he was doing the best. So it was like अरे यार जैसा बाप है वैसा बेटा है यहाँ पे. So so that kind of yeah, so thing. Yes, of course. That's beautiful, Ashraf. Thank you for sharing that. Yeah. And आपका पूरा conversation, आपकी stories, आपका thought process इतना positive है, इतना uplifting है, ये काफ़ी rare होता है, especially being the alienated parent, जिसमें things are very difficult, आप अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं, and बहुत जल्दी sadness, depression, anxiety बहुत जल्दी हमारी life को control करने लगते हैं. बट आपने इसको you've turned it on its head and you've made it so positive. आपने इसको एक मूवमेंट की तरह से बना दिया है. एंड यू मेंशन ब्रीफली अर्लियर कि आपने यूट्यूब पर भी इसके वीडियोस डाले हैं, योर prayer run and the other events that you do, and so tell us a little bit more as a closing note about your YouTube channel. किस नाम से आपका चैनल है, वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, एंड अगर कोई आपके साथ कांटेक्ट करके आपसे एडवाइस लेना चाहे या कोई एलिनेटेड पेरेंट है, if there is any support group that you're a part of where people can connect and sort of get more motivation, get more help, get guidance, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए. Yes. Well, my YouTube channel is Prayer Run. Okay, I will share the link with you, in fact, so that people can Please follow do. that. And I am a part of the group Hara Nahi.
okay, which is the core group that is there. And इसके अलावा prayer run is one of the group that we have. Okay. And yes, I mean, yes, of course, if there is anybody who's feeling down, they're on the verge of giving up, they can always connect with me, and we can I can be all ears, listening to them, and I will try and motivate them to come out of that victim zone. And yeah, so that's there. Yeah. Perfect, Ashraf. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for sharing your story. And सबसे ज़्यादा thank you for sharing your positivity. And I'm hoping कि जितने भी लोग इस podcast को सुने, इस episode से कुछ notches ऊपर अपने emotions को लेकर के वापस जाएं और इस strength के साथ में जाएं that if you keep pursuing, अगर आप नए तरीके ट्राई करते हैं, अगर आपके बच्चों से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, उस नेगेटिव लूप में मत जाइए. Don't become the victim. Become somebody who can inspire your children. एंड एक उम्मीद के साथ में आगे बढ़िए कि आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, आज आप जो बीज बो रहे हैं, कल आपको उसका फल मिलेगा. व्हेन योर चिल्ड्रन लुक बैक एंड दे सी कि पिछले इतने महीनों में या इतने सालों में मेरे फादर ने या मेरी मदर ने इतने एफर्ट्स किए हमारे लिए, द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डन, द पॉजिटिविटी दैट यू ब्रिंगिंग, और जिस सपोर्ट और जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे उसे देख करके इंस्पायर होंगे. एंड होपफुली यू विल नॉट हैव टू इवन एक्सप्लेन कि क्या हुआ था, बट उसको देख करके ही वो समझ पाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं. थैंक यू सो मच अशरफ once again for being here. If you have any closing thoughts, I'd love to hear. Yeah. Well, thank you, Pallavi, for inviting me for this The pleasure. podcast, first of all, and giving me a platform to talk about my life journey. Okay. And there are not many podcasts like this wherein people are able to speak their heart out. Okay. We need much platforms like this. Okay. And yes, of course, just like you rightly said, that we need to become a warrior. Okay. Because your children will see the power and strength in you. Okay. No children wants to see a father who's given up. Okay. And if you are a winner, your children will drive a lot of strength, and when they get into such a situation, they will come out as a winner also. Okay. Yeah. So मेरा यही कहना है हर किसी से कि don't give up hope, and keep fighting back, and हारा नहीं should be the enthusiasm, the spirit that you have. And आज नहीं तो कल हम जरूर जीतेंगे इस जंग में. And thank you for that. Thank you Ashraf for being here. It's been a real pleasure. Thanks a lot. Thank you, Pallavi.